नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कड़ोद सेवायक ट्रस्ट कड़ोद द्वारा तेजस आई अस्पताल मांडवी के सौजन्य से आज 13 अगस्त गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर दामोदरदास गांधी अस्पताल कड़ोद में आयोजित हुआ। शिविर में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की समस्या, छारी, बेल, नासूर तथा दृष्टि संबंधी समस्याओं सहित आंखों के विभिन्न रोगों की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क जांच की जाएगी। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन एवं चश्मे की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर स्थल पर सुबह 8:30 बजे से पंजीकरण शुरू होगा। ऑपरेशन की आवश्यकता वाले मरीजों को अस्पताल के वाहन से तेजस आई अस्पताल मांडवी ले जाया जाएगा। ऑपरेशन के अगले दिन मरीजों को वापस कड़ोद पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। मरीज और उसके साथ आने वाले एक व्यक्ति के रहने एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। ऑपरेशन के बाद आवश्यक दवाइयां, गॉगल्स भी मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा आंखों के नंबर की जांच कर जरूरत के अनुसार नंबर वाले ऐनक भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सेवायक ट्रस्ट ने कड़ोद एवं आसपास के लोगों से इस निःशुल्क नेत्र शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। ये कैंप के दाता कड़ोद निवासी हाल USA स्थित क्योरी बहन मुकुलभाई गांधी के सहकार से संपन्न हुआ। सेवा यज्ञ में कड़ोद हाई स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल सर, रिटायर्ड टीचर गांधी साहब, उमेश भाई जोशी, निलेश भाई पारे, कुश भाई जोशी, धर्मेश भाई मोदी, दीपक भाई, किरण भाई और कई सेवायक ट्रस्ट के मेंबर और सेवाभावी व्यक्ति एवं गांधी अस्पताल का स्टाफ उपस्थित रहे थे। दीपेश भाई रामानंदी की रिपोर्ट। આજના નેત્ર યજ્ઞના સ્પોન્સર આપણા ગામના જ પ્રિયકાંતભાઈ ભૂખણદાસ ગાંધી, એમના દીકરા મુકુલભાઈ અને એમની પત્ની કેયુરીબેન તરફથી છે। કેયુરીબેન મુકુલભાઈ ગાંધી હાલ USA છે અને આપણા સેવા યજ્ઞની ઘણી પ્રવૃત્તિઓમાં એમનો સિંહ ફાળો છે। જ્યારે સેવાયજ્ઞની શરૂઆત થાય ત્યારે એઓએ 51,000 રૂપિયા આપીને આપણા પગ ઊંચા કરી દીધા અને આજે અવિરત એમની સેવા ચાલુ છે। જય હિન્દ, જય ભારત। દ્વારા આયોજિત અને દામોદરદાસ ગાંધી હોસ્પિટલના સહકારથી કડોદ ખાતે હોસ્પિટલમાં દામોદરદાસ ગાંધી હોસ્પિટલમાં આજરોજ નેત્રયજ્ઞ રાખવામાં આવ્યો છે અને આ યજ્ઞ સૌપ્રથમ તો આદરણીય પરમ વંદનીય સ્વામીજીને યાદ કરીને એમના તમામ શિષ્યો તેમજ સજ્જનો દ્વારા આ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે। સેવાયજ્ઞ ટ્રસ્ટ એ નિઃશુલ્ક કામગીરી કરે છે। કોઈ પણ જાતના પૈસા લીધા વિના દરેક કાર્ય કરી રહ્યું છે। તેમાં આ એક વધુ મોરપીચ ઉમેરાઈ છે। નેત્રયજ્ઞ ટ્રસ્ટ આખા વર્ષમાં 4 વખત કરવામાં આવે છે અને એની સુવાસ ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી છે। જે કોઈ દર્દીઓ હોય એ અહીંયા વિનામૂલ્યે અને વિના સંકોચે આવી શકે છે। વિનામૂલ્યે એમની સારવાર થાય છે। એમની દવા, ચશ્મા, એમનો સારવાર તમામ નિઃશુલ્ક છે। કોઈ પણ જાતનો ખર્ચ કરવાનો રહેતો નથી અને તમામની સાથે અમારા સ્વયંસેવકો ખૂબ જ આદરથી વર્તે છે। અહીંયા કોઈને કંઈ પણ મુશ્કેલી પડે નહીં એની સતત કાળજી રાખવામાં આવે છે। સેવાયજ્ઞ ટ્રસ્ટ એ કડોદ ખાતે સૌથી ઉચ્ચ પ્રકારનું કામગીરી કરતું આવ્યું છે અને કરતું રહેશે। જો કોઈ જરૂરિયાતમંદ બાળકો હોય, જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓ હોય તો એવા વ્યક્તિઓએ અમારા ટ્રસ્ટનો સંપર્ક કરવો। કોઈ પણ જરૂરિયાત હોય, પછી એ ટિફિન સેવા હોય કે डाक्टरी सारवार माटे होय के पछी अन्य कोईपण रीते आर्थिक मुश्केली होय तो अमारो ट्रस्ट ए उकेलवा माटे हमेशा तत्पर रहे छे। सेवायज्ञ ट्रस्ट द्वारा आ नेत्रयज्ञने खूब ज सारो सहयोग मळी रह्यो छे। अत्यारे 1 कलाकनी अंदर 100 जेटला दर्दीओ आवी गया छे अने एमनी तपास चालू छे। सेवायज्ञ ट्रस्ट हमेशा खूब सारी प्रगति करे। स्वामीजीना आशीर्वाद एमनी साथे छे अने गामना तमाम सज्जनों अहींया मन साथे पूरा मनथी पूरा सहकारथी काम करे छे।
ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।